Father, we want to thank you for this day, Lord, for this time, for this place. We pray, Lord, that you would give us wisdom and guidance as we conduct this study. Open our ears, our hearts, O Father, to listen to your word. Give Brother Claude the wisdom to share your word, Lord, today, that we might understand it. We commit this time, Lord, and this evening into your loving hands. Lead us, guide us, and direct us by the power of your Spirit. Amen. And in Jesus is everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow he's my comfort, in trouble he's my stay. He tells me every care on him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. In sorrow he's my comfort, in trouble he's my stay. He tells me every care on him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my grief has taken and all my sorrows borne. In temptation he's my strong and mighty tower. I've all for him forsaken, I've all my idols torn from my heart, and now he keeps me by his power. Though all the world forsake me and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. In sorrow he's my comfort, in trouble he's my stay. He tells me every care on him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He'll never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do his blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With his manna me, my hungry soul shall feed. When crowned and lost in glory, I'll see his blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. In sorrow he's my comfort, in trouble he's my stay. He tells me every care on him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. More about Jesus would I know, more of his grace to others show, more of his saving fullness see, more of his love who died for me. More about Jesus, more about Jesus, more of his saving fullness see, more of his love who died for me. More about Jesus let me learn, more of his holy will discern. Spirit of God my teacher be, showing the things of Christ to me. More about Jesus, more about Jesus, more of his saving fullness see, more of his love who died for me. More about Jesus in his word, holding communion with my Lord, hearing his voice in every line,
making each faithful saying mine. More about Jesus. More about Jesus. More of His saving fullness, see. More of His love who died for me. More about Jesus on His throne. Riches and glory all His own. More of His kingdom sure increase. More of His coming, Prince of Peace. More about Jesus. More about Jesus. More of His saving fullness, see. More of His love who died for me. Today I'll be sharing on is Matthew chapter 25 verses 31 to 46 a plan for our salvation unto eternal life. Okay, we all know, since we all are grown in the word, that Matthew chapter 25 verses 31 to 46 is not a plan for our salvation. आमची सोडवणा पासत न्हू Matthew 25, पूण आमी घेवया हे. Tomorrow if somebody questions us, how are we going to answer them? Okay, so if we read the Olivet Discourse where Jesus is speaking of an end time prophecy. जेजू ख्रिस्त उलयता, प्रभु यीशु अंतिम prophecy, अंतिम भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहा है. मत्ती अध्याय 25, Matthew chapter 25, 31 to 46. Okay, you can read it, brother. So, Brother Rowan, you can read it. Matthew Yeah. chapter Matthew chapter 25 verses 31 till 46. 25 verse 25, Matthew chapter 25, 31 to 46. Hindi, no, brother. Hindi. 25, 31 to Rachel, get my Hindi. That. Which one? The one with the leather, whitish. 31 to 46. When the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. And with his holy angels. Holy angels. So we very clearly know in Revelation chapter 19 verses 13, 14, 15, when Jesus Christ comes on the white horse, who is coming with Him? Angels. The holy angels. We who are raptured are not coming back. But a person who is not dividing the word, जो कोई भी सत्य के वचन को सही रीति से विभाजन नहीं कर रहा है, वो क्या कहेगा कि हम लोगों को जिसको रैप्चर किया गया है, हम लोगों को वो लोग वापस आएंगे. हम लोग, ये हम लोग नहीं है. Clearly, when He comes in His glory with His holy angels, then brother, And before Him shall be gathered all nations, and He shall separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. second word, what is there? Shepherd divided his sheep from the goats. So Jesus is not our shepherd. Jesus is the shepherd of Israel. Israel is the lost sheep. Jesus is the shepherd. Okay. Further, brother. And He shall set the sheep on His right hand, but the goats on the left. So He shall set the sheep on His right hand, but the goats on His left hand. Yeah, further. Then shall the King say unto them on His right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Verse 25. Yeah. For I was Very important. Now, what Jesus is saying: For I was. hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and ye took me in. Stop, brother. Brother, हिंदी में पढ़ो भाई. मत्ती अध्याय 25 वचन 35, 34 और 35. दोनों 34, 34. तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तूने मुझे अपने घर में ठहराया। 37. Naked, and ye Yeah. clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee and hungry, and fed thee, or thirsty, and give thee drink? When saw we thee a stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee? Or when saw we thee sick, or in prison,
and came unto thee. And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. For I was an hungered, and ye gave me no meat. I was thirsty, and ye gave me no drink. I was a stranger, and ye took me not in. Naked, and ye clothed me not. Sick, and in prison, and ye visited me not. Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, and athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me. And these shall go away into everlasting punishment, and but the righteous into a life eternal. मैंने 45 आणि 46 वाच, ओके. तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया. और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे. Okay, so what do we see over here in Matthew chapter 25, 31 to 45? What do we see? We see over here that Jesus is speaking of the sheep and the goats. मेमले के बारे में और बकरियों के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि ये मेमले जो है मेरे राइट हैंड साइड में आ जाओ और बकरियां जो है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ. तो ये बकरी जो मेमले है, जो शीप है, वो मेरी बातें सुन रहे थे और वे जब मैं जेल में था वो आए वहाँ पर. जब मैं भूखा था, कपड़ा नहीं था, उन लोगों ने कपड़ा दिया. भूखा था तो मुझे खाने दिया. तो आगे यीशु क्रिस्त क्या कहता है, भाई जो आपने पढ़ा वापस पढ़ो, 45 और 47. तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया. और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे. Okay, so here Jesus is very clearly saying, then shall he answer, not to one of these least of these, he did it not to me. Verse 46, and these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. So here basically Jesus is speaking of eternal life. That means those who did not feed the hungry, who did not clothe the naked, who did not go and meet the sick, who did not go and meet the people in prison, did not do the good works, and because they did not do these good works, they are put into eternal fire. Now very clearly, these are sheep and these are not the body of Christ. When someone says, no, this is mentioned in the Bible, so a person who does not divide the word rightly, and a person who does not believe that the sacrifice, the finished work of the cross of Jesus Christ on Calvary, is finished once and for all, he will say, no, you have to do works. आपको कार्य करने की जरूरत है, वैसा कहेगा वो. देखो, भूखा था, खाना दिया, कपड़े नहीं थे, कपड़े दिए, जेल में थे, जेल में जाके विजिट किया, हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में जाके विजिट किया. नहीं किया, वो बकरियां हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड में आओ. जिसने किया वो शीप है, मेरे राइट हैंड साइड में आ जाओ. तो ये जो है वो कार्य है. और बहुत से लोगों जो धर्म के भीतर है, जो राइट डिवीजन नहीं करते, वो स्क्रिप्चर कोट करके कहते हैं, देखो आपको कार्य करने की जरूरत है. अगर हम लोग देखेंगे 34 और 46, कैन यू रीड मैथ्यू 25. Yeah, Matthew chapter 25 verses 34 and 46. मत्ती अध्याय 25 वचन 34 और 46. 46. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. He's saying, inherit the kingdom prepared for you from the foundations of the world. Brother Hindi 34. तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया. दाहिनी ओर मतलब राइट हैंड. आओ और उस राज्य मतलब किंगडम गॉस्पेल के बारे में बात कर रहे हैं.
Okay, 47 brother, 46. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. And these जो मेरे बाईं ओर है उनको नरक में जगह मिलेगा। बेटा हिंदी में पढ़ो। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी जो बाईं ओर है और अधर्मी जो दाईं ओर है नरक में जाएंगे, और जो बाईं ओर में है वो कहां पर जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। सो वेरी क्लियरली यहाँ पर प्रभु यीशु कार्य के ऊपर पॉइंट कर रहा है। जीसस क्राइस्ट इज पॉइंटिंग आउट ऑन द गुड वर्क्स दैट दिस पीपल डिड एंड दिस will receive the kingdom. So basically Jesus is speaking of a kingdom gospel over here. It was not the gospel of grace. Now very often people use this, many religious institutions they use this. See, we have to go to visit the sick, we have to go and visit this, so they focus more on their own work. वो लोग खुद अपने कार्य के ऊपर फोकस करते हैं, न कि जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर कार्य किया उसके ऊपर फोकस नहीं करते। अगर करेंगे भी तो दोनों साथ में मिलावट करते हो, मेरा कार्य और प्रभु यीशु का कार्य। They are mixing up both the works. God will reward us with eternal life and let us enter into His kingdom only if we do good works. यह उनका मानना है। खुदा हमें स्वर्ग में प्रवेश करने देगा सिर्फ अगर मैंने अच्छा कार्य किया तो। While this passage surely stresses on good works resulting in eternal life, there is something which is very very important which we overlook. Just because a verse in the Bible, that does not mean that that verse is to us and about us. ये verse जो बाइबल में है इसका मतलब ये नहीं है कि बाइबल ये वर्स मेरे बारे में बता रहा है और मुझे कह रहा है। इट इज नॉट अबाउट मी एंड इट इज नॉट एड्रेस्ड टू मी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू डिवाइड द वर्ड राइटली, जब हम लोग शब्द का विभाजन करते हैं, सो वी शुड नो दैट मैथ्यू मार्क ल्यूक जॉन whatever is mentioned over here, what Jesus is speaking in Matthew chapter 25 verses 31 to 46 is coming under the kingdom gospel. It is coming under the division of prophecy, not under the division of mystery. Here they needed works very clearly. They had to visit the sick, they had to visit the people in prison, they had to visit those who were hungry, they had to visit the widows, they had to do works. If their works were not there, they could not prove their faith. यहाँ पर उनका विश्वास प्रूव करने के लिए उन्हें कार्य करने की जरूरत थी। यहाँ पर तुमको और मुझको हमारे विश्वास प्रूव करने के लिए हमें प्रभु यीशु के कार्य पर विश्वास करना है। टू प्रूव आवर फेथ वी हैव टू ट्रस्ट इन हिज वर्क। हियर टू प्रूव देयर फेथ दे हैव टू ट्रस्ट इन देयर ओन वर्क्स। ओके, अंडरस्टैंडिंग नो व्हाट आई एम सेइंग, है ना? अंडरस्टैंडिंग नो हु इज द ऑडियंस। सबसे पहला यहाँ पर जो बातें कर रहा है वो बातें किन लोगों से बात कर रहा है? Jews. Who are the audience? Very right, Jews. Now since we all are grown, we know about it. But suppose there are some people who take that full Genesis from Revelations is addressed to us and about us. बहुत से लोग जो सत्य के वचन का विभाजन नहीं करते, वो लोग उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो कुछ भी लिखा है कहते हैं हमारे लिए लिखा है और हमारे बारे में लिखा है। नहीं, हमारे लिए सब कुछ नहीं लिखा है और हमारे बारे में नहीं लिखा हुआ है। हमेशा याद रखना है, we should remember one thing, that God is dealing with two different types of people. One is Israel and the other one is the body of Christ. Israel is totally different, the body of Christ is totally different. Here in Matthew, Mark, Luke, John, they had to pray for Israel to be saved. They had to bless Israel to be saved. Today here, you and I don't need to pray for Israel or bless Israel. Today if there's some war going on, we don't pray, Lord, save those people, let those people not be dead. We pray for their salvation. We don't pray for their protection. But here, they have to pray for their protection. Psalms 122, I'll show it to you all. Now, we do not appeal to Jesus Christ's earthly ministry to see how salvation unto life works for us today. आज हम लोग यह नहीं देखते कि प्रभु यीशु का जो संसारिक जो सेवकाई था वो हमारे उद्धार के ऊपर क्या महत्व रखता है। हमारा उद्धार प्रभु यीशु के संसारिक मिनिस्ट्री के ऊपर नहीं था। हमारा जो सल्वेशन है वो प्रभु यीशु के स्वर्गीय सेवकाई पर निर्भरित है। स्वर्गीय, इट इज हिज हेवनली मिनिस्ट्री दैट आवर सल्वेशन डिपेंड्स अपॉन. इट इज नॉट जीसस अर्थली मिनिस्ट्री दैट आवर सल्वेशन डिपेंड्स अपॉन. आफ्टर ऑल, Paul is God's spokesperson. If we read Romans chapter 11 verse 13, रोमियो के 11 का 13 पढ़ेंगे हम लोग. Paul says in English, Romans chapter 11 verse 13,
For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify my I magnify my title. office. I magnify my title as a pastor. Paul is not magnifying his title. Paul is magnifying his office. Paul is magnifying his office. For I speak to you Gentiles, as much as I am an apostle of the Gentiles, I magnify my office. हिंदी में भाई, मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें करता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ। मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ। मैंने ये नहीं कह रहा कि मैं अपने नाम की बड़ाई कर रहा हूँ। मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। आई एम एन एपोस्टल ऑफ द जेंटाइल्स। वेरी क्लियरली, Paul is an apostle of the Gentiles, and who is the apostles of the Jews? Peter. Go to Galatians chapter 2 verses 8, brother. 8. Galatians chapter 2 verses 8. Yeah. क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव प्रेरिता के कार्य, सो जितने पतरस को खतना किए लोगों में प्रेरिताई के कार्य बहुत जोरों से की, सहित करवाया। उसी ने मुझे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। या ब्रदर इंग्लिश। For he that wrote effectually in Peter to the apostleship of the circumcision, the same was mighty in me toward the Gentiles. So Romans chapter 11:13, रोमियो का 11 का 13 वेरी क्लियरली कह रहा है कि पौलुस अन्य जातियों के लिए प्रेरित था, और गलतियों के अध्याय 2 वचन 8 वेरी क्लियरली बता रहा है कि पतरस जो था वो अन्य जातियों के लिए प्रेरित था। वेरी क्लियरली। समथिंग यू वांटेड टू आस्क मी? या फील फ्री। पीटर ब्रदर जूस। थैंक यू। मैंने अन्य जाति का, पतरस जो था वह यहूदी लोगों के खतना किए हुए लोगों के लिए प्रेरित आए थे। थैंक यू ब्रदर। और जो पौलुस था वो खतना रहित अनसर्कमसाइज्ड पीपल या जेंटाइल्स के लिए प्रेरित था। तो यहाँ पर प्रभु यीशु क्लियरली अपने 12 शिष्यों से कह रहा है कि तुम अन्य जातीय लोगों के पास मत जाओ, लेकिन इजराइल की खोई हुई भेड़ के पास जाओ। मत्ती के अध्याय 10 का 5 और 6। इसलिए जब हम लोग देखते हैं मत्ती के 25 में, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अस, लेकिन बहुत से लोग इस स्क्रिप्चर को मिसहैंडल करते हैं। क्या यदि हम लोगों ने इस स्क्रिप्चर को मिसहैंडल किया, राइटली डिवाइड नहीं किया, क्या हम लोगों को नरक में लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते? What if we mishandle Matthew chapter 25 verses 31 to 46 and tell people today in 2025 that you have to be doing what Jesus is saying? Can this scripture lead people to hell? Hello, can this scripture lead people to hell? The moment you add a work, thinking that because you are doing a work, that is why you are going to be saved, you have lost your salvation. You are not saved at all. You cannot add works to your salvation. Can you read Galatians 5 verses 4, brother? गलीतियों की 5 का 4। Christ is become of no effect unto you, whomsoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. And Galatians 2:21, 2:21. गलीतियों का 2 का 21। I do not frustrate the grace of God. I do not frustrate the grace of God. For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. वेन या फिर हिंदी में पढ़ो गलीतियों 2 का 21 और गलीतियों 5 का 4। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। So what are we doing? What are we doing when we do any work added to the cross? Indirectly, we are making the finished work of the cross of no value. हम लोग लिटरली उस क्रूज पर जो प्रभु यीशु ने कार्य किया है, उस कार्य के ऊपर हम लोग थूकते हैं। थूकना मतलब क्या? हम लोग उस कार्य को व्यर्थ करते हैं, नाकारतात आम्ही ते कार्य नाकारतात। कोणी ऐकवतात कोंकणींपासून समजून घ्या, तुम्ही जरी तुमची कॉंग्रिगेशनाक शिकवतात की ना आमकां कितें कार्य करूंक जाय, कार्य केल्यार तो मनशाक स्वर्गीचे राज्यान दाखिलाच ना. They have no entry. This is meant for Matthew chapter 25 verse 31 to 46 is meant for Israel. और यहाँ पर Matthew chapter 10 5 to 7 very clearly Jesus is saying, go not into the way of Gentiles and into the city of Samaritans enter ye not, but go rather to the
lost sheep of the house of Israel. प्रभु यीशु क्लियरली ये कमांड दे रहा है, go to the lost sheep of the house of Israel. और मत्ती के 15 का 24 में भी प्रभु यीशु क्या कहता है कि मुझे भेजा गया है सिर्फ इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास. Very clearly, Matthew chapter 10, 15 verse 24, I am sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Now, what does Paul speak about Jesus Christ in Romans 15 verses 8? And what does Paul speak about himself in Romans chapter 15 verses 16? रोमियो के 15 का 8 में और रोमियो के 15 के 16 में पौलुस प्रभु यीशु के बारे में क्या कह रहा है अपने बारे में. इसका यह मतलब नहीं है कि अगर हम लोग रोमियो के 15 का 8, if we take Romans chapter 15 verses 8, if we take Romans chapter 15 verses 8 on one side and Romans chapter 15 verses 16 on the other side, that does not mean to say we are comparing Jesus's divinity with Paul. No, we are not comparing Jesus' divinity with Paul. Paul is not saying he is like Jesus, or Paul is not saying he is God. But Paul is basically speaking of the earthly ministry of Jesus Christ and how Jesus Christ, the heavenly one, according to Galatians chapter 1 verses 11 and 12, Jesus, the resurrected Lord, is using Paul in his earthly ministry. Can you read Romans chapter 15 verses 8, whether in English and Hindi? रोमियो के 15 का 8. Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers. रोमियो के 15 का 8. इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना. प्रभु यीशु खतना किए हुए लोगों का सेवक बना. और पौलुस रोमियो के 15 का 16 पढ़ेंगे हम लोग. रोमन चैप्टर Then I should 15 verses 16. That I should be the minister of That I should be a minister of Jesus Christ to to the Gentiles, the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. Holy Ghost. So Paul became a minister of the Gentiles for Jesus Christ, the resurrected Lord. Yeah. हिंदी ब्रदर. रोमियो की 15 का 16. कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों को मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए. Okay, now I have written like this, so that does not mean to say I am comparing Jesus with Paul. Paul is speaking of Jesus' earthly ministry to the Jews, and Paul is speaking of his heavenly ministry through the resurrected Lord Jesus Christ to the Gentiles. Romans 15 verses 8 and 15 verses 16. Now many people who don't divide the word rightly will not want to accept this, and they'll mess up with Matthew chapter 25 verses 31 to 46. खूप पावटी मैसअप करतात. म्हणून पत्रस क्या कहता है? 2 पत्रस अध्याय 3 वचन 15 और 16 में पढ़ेंगे हम लोग. 2 पत्रस अध्याय 3 वचन 15 और 16. 2 Peter 2 Peter chapter 3 verses 15 and 16. and account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother The Paul, long suffering of our Lord is salvation, even as our brother beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, hath written unto you, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures unto their own destruction. destruction. या ब्रदर हिंदी में पढ़ो. और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, जैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों सब पत्रियों में यानी कि 13 पत्रियों में इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनता है. अभी सोचो तुम, जो पतरस था, द पीटर who was chosen for the lost sheep of the house of Israel according to Matthew chapter 10 verses 5 and 6,
according to Galatians chapter 2 verses 7, 8, 9, in 2 Peter chapter 3 verses 15 and 16, this Peter, who was a minister of, who was an apostle of the Jews, of the circumcised, he is taking Paul's side, and is saying that there are many people who under this dispensation of grace are messing up with Paul's epistles to their own destruction. यानी कि पतरस को सब कुछ मालूम था. Peter knew everything. That is why there was a discussion between Peter and Paul in Galatians chapter 2 verses 11, 12, 13. If you read Galatians chapter 2 verses 11 to 13, you see over here Paul and Peter have a discussion because Peter is eating food with the Gentiles. James and some Jews come. Peter gets up from there and Paul says, why are you putting a yoke on them when you yourself you cannot bear it? But the same Peter is talking about his beloved brother Paul. He's saying, beloved brother Paul, in all his 13 epistles is writing, which is a matter of people's salvation. But there are some who distort the truth. चंचल और कौन से लोग कहते हैं यहाँ पर हिंदी में? अनपढ़. If you translate, I'm going backward. If you translate Hindi के अनपढ़ into English, it is illiterate people. Actually, in English Bible, it is not mentioned illiterate. It is some people twist the scriptures, what Paul has spoken, to suit their own. What is this destruction about? What is this destruction Paul is speaking? ये नाश किस नाश के बारे में लिख रहा है? बाइबल में जब किसी का नाश हो रहा है तो बाइबल में जब पौलुस नाश के बारे में बता रहा है या पतरस नाश के बारे में बोल रहा है, इसका मतलब नाश क्या होता है? What is the meaning of नाश? What is the meaning of their own destruction? नरक में? Yes, नरक में. अभी यहाँ पर किसी ने तो किसी का मर्डर नहीं किया, किसी ने किसी का खून नहीं किया, किसी ने किसी का रेप नहीं किया, किसी ने एडल्ट्री कमिट नहीं किया, किसी ने किसी को गाली नहीं दिया. Nobody has murdered anybody, nobody has raped anybody, nobody has done anything wrong. But what have they done? Doctrine. जो डॉक्ट्रिन पौलुस का था, पौलुस जो कह रहा है, 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 7 पढ़ो भाई. 2 Timothy chapter 2 verses 7. What is Paul saying? 2 Timothy chapter 2 verses 7. And delivered just Lord. Now 2 Timothy chapter 2 verses 7. 2 Timothy, sorry. Consider this. Yeah. 2 Timothy chapter 7, no? 2 verses 7. Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. या मैंने हिंदी में जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा. ध्यान दे. कंसिडर, डोंट कंसिडर 2 पत्रस 3, 15 और 16 के अनुसार नाश का कारण बनता है. अगर आपने पौलुस के टीचिंग्स को इंपॉर्टेंटली नहीं लिया, जो लोग कर रहे हैं आज, प्रभु यीशु कहता है यूहन्ना के अध्याय 13 वचन 20 में क्या कह रहा है भाई? पढ़ो. जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 20 में क्या कह रहा है प्रभु यीशु? जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 20 में, Verily, verily, I say unto you, he that received whomsoever I sent received me, and he that received me received him that sent me. that sent me. Further read brother in Hindi. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ. सच 2 बार क्यों कह रहा है और इंग्लिश में वेरीली वेरीली क्यों कह रहा है? Why 2 times? वेरीली सच 2 बार क्यों? जहां बाइबल में कुछ इंपॉर्टेंट लिखा गया है उसको 2 बार रिपीट किया है. गलीतियों के अध्याय 1 वचन 8 और 9 में. यहां पर भी पॉल इज सेइंग, इफ एनीबडी कम्स एंड प्रीचेस टू यू एनी अदर गॉस्पेल, लेट हिम बी accursed. I repeat it again. He's saying, even if an angel from heaven comes and preaches to you another gospel, let him be accursed. I repeat it again. If anybody comes and preaches to you any other gospel, let him. 2 बार. So important it is. Verily, verily, such, John 13:20. Verily, verily, I say to you, if anybody accepts the one whom I sent, he is accepting the one who has sent me. हिंदी में पढ़ो भाई वापस. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है. जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है.
और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यानी कि यीशु ख्रिस्त को किसने भेजा था? खुदा पिता ने। अगर किसी ने पौलुस को ग्रहण करता है तो प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, और इसके बाद क्या होता है? वो खुदा पिता को ग्रहण करता है। अगर पौलुस के टीचिंग्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है तो प्रभु यीशु को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, और प्रभु यीशु को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है तो खुदा को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। तो इसमें से वह मनुष्य कहां पर जाएगा? नरक में जाएगा। लेकिन शैतान ने क्या किया है? व्हाट हैज सैटन डन टुडे? सैटन हैज ब्लाइंडेड द आईज ऑफ पीपल फ्रॉम द ग्लोरियस गॉस्पेल, नॉट फ्रॉम द गॉस्पेल, ग्लोरियस गॉस्पेल। द गॉस्पेल इज शेयर्ड, मैथ्यू 28, 18, 19, 20। मत्ती अध्याय 28 का 19 और 20। जाओ और मेरे नाम में, पिता के नाम में, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और जो कुछ भी मैंने सिखाया वो सिखाओ। गॉस्पेल शेयरिंग हो रहा है, लेकिन ग्लोरियस गॉस्पेल शेयरिंग नहीं हो रहा है। दूसरा सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। यह दूसरा सुसमाचार, यह जो कार्य का जो वस्तु है, वो कार्य के वस्तु लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं वो लोग। गो फर्दर हो हियर, verse 32, brother. Can you read Matthew chapter 25 verses 32? It speaks about all nations. Yeah. And before him shall be gathered all nations, All nations. and he shall separate them one from another, as a shepherd divide his sheep from the goats. These all nations are Gentiles under the dispensation of law, under the prophetic program. These Gentiles are not under the mystery program. They are not under the dispensation of grace. So all the nations had to be saved at that time by following the covenants of Israel. हिंदी में पढ़ो भाई, Matthew chapter 25 verse 32. और सब जातियों उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियां से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। यहाँ पर क्या करना था उन लोगों को? जो कोई भी जेंटाइल्स है उनको अकॉर्डिंग टू एब्राहमिक कवनेंट, अब्राहम का जो कवनेंट था ना, वाचा था, उस वाचा के अनुसार उनको इजराइल को ब्लेस करना था। अगर वो लोग इजराइल को ब्लेस नहीं करते और कर्स करते तो वो भी श्रापित होते। अब्राहम का वाचा, एब्राहमिक कवनेंट। लेट अस गो टू जेनेसिस चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 3। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 का 1 से 3। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. अब ये एकदम इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्सेस 3, या। And I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee. And in thee shall all families of the earth Shall be blessed. all families, that all families are Gentile families, shall be blessed only if they bless the Israel. nation of Israel. Yeah, brother, read in English, Hindi. यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाए। Okay, so here in Matthew chapter 25, 31 to 46, we see that the Gentiles had to bless during this 7-year tribulation period. They had to bless Israel. When they would bless Israel, they would become the part of Revelation chapter 20 verses 1 to 6. That is the part of the millennium. यह जो 1000 साल में जो आने वाला है, उस 1000 साल में वे भागीदार बनने वाले थे। यदि ये जेंटाइल्स, ये अन्य जातियों के लोग, सॉरी ये नहीं, ये अन्य जातियों के लोग जो मत्ती के 25 का 31 से 46 में यहाँ पर 7 साल के जो कष्ट है, इजराइल के लोगों को ब्लेस नहीं करते,
तो वे उनका प्रवेश यहाँ पर नहीं होता, उनका प्रवेश कहाँ पर होता? आग के झोंके में, लेक ऑफ फायर में. सो फॉर अ जेंटाइल टू बी सेव्ड ड्यूरिंग दिस ट्रिबुलेशन पीरियड, he had to bless Israel. If he would not bless Israel, he would not enter into the 1,000-year millennium. If he blessed Israel, he would enter into the 1,000-year millennium. Otherwise, he would be thrown into the lake of fire. Okay, so that was according to the promises of Genesis chapter 12 verses 1 to 3. If you bless, I will bless. If you curse, you will be cursed. There will be blessed of my father inherit. No, मत्ती का अध्याय 25 का 34 और 46 जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, we just read it just now. Yeah, Matthew chapter 25, 34 to 36. Yeah, read 34 and 46, brother. This was the same one. Yes. 34 and 36, no? Yeah, 34 and 46. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. जो चरवाहा था, जो शीप थे राइट हैंड साइड बाईं ओर थे, उनको वो ब्लेसिंग्स मिलता था क्योंकि उन लोगों ने इजराइल को ब्लेस किया. और आगे 46. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. जिस किसी ने भी 7 साल के कष्टों के समय इनको ब्लेस नहीं किया इजराइल को, कहां पर जाएंगे? लेक ऑफ फायर में. गो टू वर्स 41 ब्रदर नाउ. 41 46 यू रेड 41. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Did they commit adultery? Did they commit murder? There's no reference of sin over here, but the reference is that they had not blessed Israel. They never came under the covenants of Israel. No? If you read Matthew chapter 15 verses 23, 24, 25, 26, there you see the Syrophoenician woman, the Canaanite woman, tells Jesus, heal my daughters. So Jesus says, should I take the food of these children and give it to the dogs? What does she say? Even the dogs eat the crumbs fallen on the floor. Even कुत्ते जो जमीन पर गिरते हैं वो खाते हैं. यानी कि उस कैनानाइट स्त्री ने स्वीकार कर लिया है कि मुझे अगर आशीषित होना है तो मुझे इजराइल के नीचे आना है. She became humble enough to come under the covenants of Israel. So any Gentile could be saved over here. Number one, if they blessed Israel. If they cursed Israel, they would not be saved. Number two, if they came under the covenants and the promises of Israel, like obeying and doing whatever God told Israel over there. Further on, Matthew 25, 31 to 46, in no way, number one, applies to us for the following reasons. मैं कुछ reasons दे रहा हूँ brief में और समाप्त करता हूँ. सबसे पहला reason, firstly, Paul says that Israel is currently fallen. Salvation is coming to the Gentiles without the nation of Israel. आज के समय में जो उद्धार है वह सिर्फ अन्य जातियों लोगों के लिए है. अगर कोई इजरायली, कोई यहूदी आदमी आज उद्धार पाना चाहता है तो उसको सिर्फ प्रभु यीशु के क्रूस पर जो कार्य किया है उसको स्वीकार करना है. उसके बावजूद अगर कुछ भी स्वीकार करता है तो उसको उद्धार नहीं होता है. जैसे कि कार्य रोमियो के 11 का 11 से 14, Romans chapter 11 verse 11 to 14. Say then, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their fall salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. So these are all the points which I am just speaking are the reasons why Matthew chapter 25 verses 31 to 46 does not apply to us. Now, Romans chapter 11 verse 12, if their fall be richest of the world and the diminishing of them the riches of the Gentiles, how much more is their fullness? Verse 13, for I speak to you Gentiles as much as I am an apostle of the Gentiles and magnify my office. If by any means I may provoke to emulation them which are my flesh and might save some of them. See what Paul is saying, save some of them. Save whom? Save those Jews of his. Okay? Rather than God's word coming to them through his message. Okay, further. If there is no Israel today in the dispensation of grace, then it is impossible to bless or curse Israel today. There are many people, what they say, they use Psalms 122 saying, let us pray for Israel. When we pray for Israel, we will be saved. बहुत से लोग भजन संहिता 122 कोट करते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को इजराइल के लिए आशीष करना है. अगर हम लोग आशीषित करेंगे तो हम पर आशीषित आएगा. नहीं, हमारा आशीष आज इजराइल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. Our blessings, our salvation is not dependent upon we blessing Israel. Our salvation, our blessing is dependent totally upon the work of the cross. There are grace churches who say that no, we are spiritual Israel. We are not spiritual Israel in any way.
if you are saying you are spiritual Israel, you are revoking and you are undoing Paul's ministry. John chapter 13 verses 20. जो कोई भी जिसे मैं भेजता हूँ वो स्वीकार करता है, वो मुझे स्वीकार करता है, जो मुझे स्वीकार करता है वो पिता को स्वीकार करता है. अगर उसको रिजेक्ट करता है तो मुझे रिजेक्ट करता है, और मुझे रिजेक्ट करता है वो डायरेक्टली रिजेक्शन करता है. सो salvation is very simple today. You reject the work of the cross 100%. You add any works. अगर कोई अपना प्रार्थना भी एडिशन कर रहा है, if anybody is adding some prayer of theirs, saying, "Oh, I'm praying, that's why God will save me." No, you're not saved. If somebody is saying that, "No, I'm going to stop sinning, and when I totally stop sinning, then God will be pleased with me." No, you cannot please God. You cannot please God. It is Jesus who has pleased God. No, Matthew chapter 3:17 and Luke chapter 3 verses 21-22. It is Jesus. Father says, "This is my only beloved son, in whom I am well pleased." And according to Ephesians chapter 1 verse 6, we are placed in the beloved. Can you read brother? Ephesians chapter 1 verse 6. Ephesians का 1 का 6. Very good scripture it is. Ephesians का 1 का 6. Ephesians chapter 1 verses 6. Matthew chapter 3 verses 17. And Luke chapter 3 verses 21 to 22. Here in Matthew chapter 3 verse 17, the Heavenly Father says to all people gathered, "This is my only beloved son in whom I am well pleased." And in Luke chapter 3 verses 21 to 22, the Heavenly Father is saying, "You are my beloved son in whom I am well pleased." So in both the places the Father is pleased with whom? Israel. With Jesus. And now what does Ephesians chapter 1 verses 6 say? To the praise of the glory of His To the praise of the glory of His grace, wherein He had made us wherein accepted He has in the made beloved- us in the beloved. in the beloved. Today you and I are in whom? The beloved. I have not put the, it is the. You and I are in the beloved. So if Matthew 3:17 says the Heavenly Father is pleased, saying that this is my only beloved son in whom I am well pleased. Luke 3 verses 21 to 22. You are my beloved son in whom I am well pleased. So where are you and I today? Can we please the God with any of our good works? We are pleasing to the Father because we are in Christ. Ephesians chapter 1 verses 6. We become the Heavenly Father's beloved because we are in the beloved. You are out of the beloved, you are going to hell. Very clear. The moment you accept the gospel, 1 Corinthians 15 1 to 4, आप स्वीकार करते हो 1 कोरिन्थियंस 15 वचन 1 से 4 में कि प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मरे हुए में से वह जी उठा. यूं ही नहीं मानते हो आप, सचमुच में दिल से मानते हो. Wherein you stand, you know, you keep into remembrance. You don't believe in vain. खुदा क्या करता है? आपको आदम से निकाल कर, he takes you out of Adam and he puts you in the beloved. Ephesians chapter 1 verse 6. At that very moment what happens? Colossians chapter 2 verses 13. आपके सब पापों का दंड का आपको क्षमा मिलता है. भूतकाल, वर्तमान काल और 90 साल 100 साल तक आप जियोगे. अगर आप 50 साल के हो, 90 साल की उम्र में अगर आपने कोई पाप किया है जो आपको आज पता नहीं है, you do not know the sin that you will commit at the age of 90, but at the cross 2000 years back, God knew it, Jesus knew it, and He forgave you over there. Your past, your present, your future. Colossians 2:13, you are forgiven. Immediately what happens? आपके ऊपर छाप पड़ता है. Ephesians chapter 1 verses 13. You can read, when you heard the gospel of salvation. Very important this, okay? It's only when you heard the gospel of salvation that you are sealed with the Holy Spirit of promise. Yeah, read brother. 13. Ephesians chapter 1 verse 13. In whom ye also trusted, In whom you also trusted after that ye heard the word after of you truth, heard the gospel of your Word of the truth. word of truth, The gospel of the gospel of your salvation, salvation. You heard the word of truth. 2 Timothy 2:15. You In- heard rightly divided truth. The gospel of your salvation. आपने सुना, कुछ किया नहीं. You have not done anything. in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Seed. मतलब मैं अपने आप बिलीव कर लिया. Have I believed it directly? No. Colossians 2:13 says what? He has quickened us. Read brother, Colossians 2:13. Quicken किया उसने, खुदा ने. सब महिमा खुदा को जाता है. मुझे ये भी नहीं कह सकता. I don't say, no, I believe that's why I'm saved. There is no I in this. No, He has quickened my spirit. He quickens everyone's spirit here. Read brother, Colossians 2 verse 10. And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, had He quickened Had He quickened you? together with Him, having forgiven you all trespasses. If He had not quickened you, you would not trust in the gospel. If you had not trusted in the gospel, you would go into hell.
So कितना अच्छा है ना गॉस्पेल, सब उसने किया है, सब महिमा उसको जाता है। हम लोग प्रार्थना भी बहुत बार करते हैं, कहते हैं भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ओके हाँ नहीं भाई मेरा जो प्रॉब्लम था ना सॉल्व हो गया, थैंक यू आपने मुझे प्रार्थना किया, अगली बार भी बोलो मैं ही प्रार्थना करता हूँ। तो जो 100% का जो महिमा उसको मिलने वाला था, उसमें से 5% का महिमा आपने अपने ऊपर ले लिया। प्रार्थना करो, प्रार्थना नहीं करना है ऐसा नहीं, यू हैव टू प्रे विदाउट सीजिंग, बट you pray for closed doors to open up. Pray without ceasing, he's saying. He's not saying pray that you get healed of all sicknesses. Pray that all your problems are solved. No. What is Paul saying in 2 Corinthians chapter 4 verses 17 and 18? It's an operation of God. Better what? It's an operation of God. Very much, very much. Quickening means God is operating and God is opening my heart. But it depends again upon my choice. If I want to shut my heart, I will shut my heart, and then there it becomes hardening. बार बार खुदा आता है, लेकिन एक ऐसा जगह आता है जब हमारा हार्ट हार्ड होता है, एंड देन वो सत्य भी जो है वो झूठ सत्य को मानने लगते हैं हम लोग। वी स्टार्ट बिलीविंग द लाई एज द ट्रूथ। नो 2 Thessalonians chapter 2 verses 10 and 11, those who do not love to be saved, किसी को प्यार नहीं है ताकि उनको उद्धार मिले, God will make them believer, lie as the truth. It is not those people who say no I don't need Jesus. It is people who will be sitting in the church. Church मतलब जो ईंट पत्थरों से बांधा हुआ जो लोग चर्च कहते हैं, उसके अंदर बैठे हुए लोग नरक में जाएंगे। कारण क्या है? लोग समझते हैं कि मुझे चर्च में आना है, चर्च में आने के बाद ही आज का दिन अच्छा जाएगा। नहीं, चर्च तो हम लोग हैं। We are the church. It is not you doing anything. You may be the worst of sinners. I'm not giving you a license to sin. I'm trying to tell you what is the value and the efficacy of the finished work of the cross. It is so great. We cannot gather it in the our mind cannot understand what is the greatness of the finished work of the cross. He's so great, and only when we understand how great we are sinners, that we have not yet stopped sinning till today, that we can understand how great is his sacrifice, because there is no sin so great that Jesus cannot forgive. There is no sin so great. But when you start adding works, you start adding Matthew 26 verses 31 to 46 to a person under the dispensation of grace, saying you have to do something. What are you doing? You are nullifying the work of the cross. You are literally making a way open for you to go to hell. I know many people will be saying ये क्या बात कर रहे हैं यार, हम लोग पाप बंद करो, पाप बंद करो, पाप बंद करो कह रहे हैं, पाप बंद नहीं किया तो नरक में जाएगा, और ये कह रहा है कि बाइबल के स्क्रिप्चर को कोट किया तो लोग नरक में जाएगा। यस, वह बाइबल का स्क्रिप्चर जो आपके लिए लागू नहीं होता है, अगर आपके लिए लागू हो गया, जैसे कि मैं एक एसएससी एक साल के एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को एसएससी के मैथ्स पेपर सॉल्व करने देता हूँ। आई एम गिविंग अ फर्स्ट स्टैंडर्ड स्कूल स्टूडेंट एन एसएससी trigonometry and geometry paper to solve. Will he be able to solve? He will not be able to solve. But God has solved our problem on the cross, given us very simple gospel, but we are taking that SSC student back again to the first standard. He has made us cross to every level and saying, come on. Salvation, he paid a ransom for all, not a ransom for many. Israel, he had paid a ransom for many, but today he has paid a ransom for all. No? Such a wonderful God we have. So all this, okay, God made, if you read Romans chapter 11 verses 25, he says that blindness in part is happened to Israel until the fullness of Gentiles should come in. Secondly, we do not have a works message from God delivered unto us through Paul. Those of the aforementioned, whatever I spoke about the works is not applicable to us anymore. We show our faith, okay, that is Israel. Many people say we should show our faith by our works. As Jesus said, we help the poor, orphans, widows, infirm. You and I don't show our faith through our work. You and I show our faith by trusting in the work of the cross. Okay? Okay, this is all what I spoke. Today, is there anything about blessing Israel, helping the poor, visiting the sick? Nothing that leads us to salvation, but everything you can do out of love. You are not doing something to be saved. You are doing everything because you are saved. आप ऐसा कुछ कार्य नहीं कर रहे हो ताकि आपको उद्धार मिले, आप अच्छे कार्य कर रहे हो क्योंकि आपको उद्धार मिला है।
मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड बाय गोइंग टू विजिट द सिक, द पुअर, the prison people. You're not visiting them to be saved, to receive salvation, but because you are already saved through his work, out of love you are going. You cannot add a bit to your salvation by doing any of the good works. Okay, so I'll stop it here. I repeated many scriptures, so all those who are watching, viewing us, we thank you very much. If you have any questions, you can please put it below in the comment section. Please stay blessed. Thank you for watching. Once again, Lord, we want to give you thanks for this day. We want to give you thanks for your provisions, Lord. Thank you, Lord, for all your provisions. Bless this food to our bodies and give us good health, we pray. Amen.